Hi guys, I'm Siddharth and in today's video I'm going to take you on a tour of Kumartuli, which is in Kolkata. It is one of the very famous places over here and it is famous for the Potters family who live over there, and they have been creating clay idols for a long time. Not only they prepare the clay idols for the festivals in Kolkata, they also export it even outside India. So let's go and explore the place. Okay, so now I have reached at the ferry ghat of Howrah, and from here I'll take a ferry to Bagbazar. Okay, so this is the ferry that I took to Bagbazar. Okay, so now I have reached at Bagbazar. Now I am going to go out and go for Kumartuli. I saw a modest locality while I entered Kumartuli. This is located by the Hooghly River between Shobha Bazar and Ahiritola. Here you can see numerous clay workshops lined up side by side, which is the workshop come store come eating and living place for many of the clay workers who work over there. This is how the clay vendors provide clay to all the workshops over here. The artists are busy in making clay idols throughout the year, as the demand for these idols are very high, not only in different parts of India but also in foreign countries like America. Their job is full of challenges and risks, as you can see over here. The detailing of clay work that I saw here is really commendable. I mean, just look at the clay idols in front of you and you'll see a great deal of detailing going over there. Okay, now I'm inside one of the factories. So let me go inside and see. He is Sanatan. He is from Odisha, but he is staying here and working since 1998. আমাদের মালিক পুরোনো মালিক উনি আমাকে নিয়ে আসতে লাগে। ये सब आपने बनाया हुआ है ये सब ना? হ্যাঁ अच्छा হিমালয় চেন্নাইতে বনা হয়েছিল শূন্য মন্দির ভেলুর হসপিটালের পাশাপাশি আর কি। अच्छा अच्छा। এইসব হয়েছে। कोलकाता में भी बना के হ্যাঁ কলকাতা ছবি এগুলো সব মানিকতলা সমাজসেবী। अच्छा মানে এই যে এগুলো প্রাইজ পেয়েছিল এশিয়ান প্রাইজ। अच्छा हाँ ये इसको प्राइस मिला था हाँ अच्छा আর সিংহ প্রাইজ পেয়েছিল আমাদের সেকেন্ড রাউন্ডে আসছিল 5000 টাকা। अच्छा আমাদের 10টা বিদ্যা हुए 10টা রূপ মা কারা। अच्छा মা কালীর 10টা জান বাজার জীবজাতে কালী পূজার সময় জান বাজার বড় মার্কেটে ওখানে পূজা हुए বিশাল বড় প্যান্ডেল। अच्छा ऐसे छाछ डाइस ये सब डाइस है ये सब फेस का डाइस है ना? हाँ हाँ अच्छा इस तरफ सीधा करके दिखा सकते हैं एक बार? अच्छा तो ये दुर्गा माँ का है ना? ना এটা কার্তিক ये कार्तिक जी का है। अच्छा तो सबके लिए एक एक अलग अलग छाछ है? হ্যাঁ এসব আছে আলাদা আলাদা এই যে দুর্গা মা का। अच्छा ये दुर्गा माँ का है और ये मतलब इंडिया के बाहर भी जाता है? হ্যাঁ আমাদের সরস্বতী একটা যাইছে আমেরিকা গেছে দুর্গা যাইছে अच्छा
सब फाइबर माटी फाइबर जाइए माटी भी जाइए। अच्छा, फाइबर और मिट्टी दोनों का। हाँ दोनों का। Now he is taking me to their godown and we will check out their stock. Okay, so this is their stock house or warehouse, whatever you want to call it, and there are so many idols are in preparation. अच्छा, तो यहाँ पे फाइबर का बनता है सर? ये मिट्टी है फाइबर का? हाँ ये माटी का चौल से। Okay, so there are people who are making clay idols now, but they also make fiber gates and all, as you can see. तो यहाँ पे कितना कारीगर लोग टोटल में रहते होंगे, कुछ आइडिया है? 3-4 हज़ार कारीगर हमें। 3 से 4 हज़ार कारीगर। अच्छा, और ये भी आपका है? अच्छा, और ये हाथ जो अलग से बनता है और बाद में फिट होता है ना? ये रामकृष्ण फाइबर है। और ये फाइबर का है ना, रामकृष्ण जी का। चलो अच्छा। हाँ हाँ, चलो। This is July and now see the idol of Kali Lord is already there, so you can imagine how early they start preparation for the pujas and all, because during puja the demands will be really high, and to cope up with the demand they start making early. Further up with Sanatan, let's see. It's looks dangerous, but okay. All right. Okay, so this is the upper deck of their store. कार्तिक तो यहाँ पे कार्तिक और सरस्वती जी का मूर्ति है। ये बहुत पहले से यहाँ पे बना के आप लोग स्टॉक कर देते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये बारिश के टाइम पे अभी पानी नहीं गिरता? नहीं गिरा है ऊपर। और ये आपने लक्ष्मी ठाकुर, लक्ष्मी पूजा का। और लक्ष्मी पूजा का। They have so many varieties of idols over here, and these are the faces they have already made, and they will just install it on the body as and when required. Now inside this you have this underground place for storing the clay. How well they have managed the space. You enter from this side, they have the main store over here, and I just showed you there is a upper deck, and there is a underground place for storing the clay. Wow. Okay, so now we have done the tour of the entire almost entire Kumartuli area, and Sanatan has told me to wait over here at their office. He has told me that he'll take me to the bank of river Ganga, and then I'll go back home.